Good morning, friends. Today we are going to start with the admission of partners practical problems. My name is Professor S.B. Tupe, and we are going to start with the first problem. Problem number 1. See the problem. It's a unsolved problem from your textbook. Now there are two partners, Vasu and Viraj, sharing profits and losses in the ratio 3:2. So old ratio is provided. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. The balance sheet given. Liabilities side, there we can see creditors are there, general reserve and capital balances. On the asset side we can see cash at bank is there, debtors, stock, investment, plant and building, these were assets. They admit Hari into partnership on 1st April, that is 1/4/2019. The term being that, क्या क्या terms है उसकी वो नीचे दिए गए, whatever the adjustments are given below. So adjustments are given that he has brought 60,000 as a capital, 1/4 share future profit में वो share करेगा 1/4 part. Second adjustment is regarding to the valuation of goodwill, as we had learned in the first lecture how to calculate goodwill with the average profits. So here average profit method, which is the first method of the valuation of goodwill, is given. There is a adjustment, read adjustment carefully, that average profits for the last 3 years are given, value of goodwill of the firm is fixed at the average profits for the last 3 years. The profits were 2009-10 it is 48,000, 10-11 81,000, 2011-12 73,500. Hari is unable to bring the value of goodwill in cash. It is decided to raise the goodwill in the books of accounts. So here 3 years profits is given, and you need to calculate just goodwill with the average of it. There is no number of years purchase, so we'll see later on how to calculate the goodwill with the help of these data. See, number 3 adjustment, reserve for doubtful debts is created at rupees 1,500. Closing stock is valued at 22,500. That is a stock which is given in the balance sheet. See, this stock 25,500 and now it is at 22,500. Reserve created y, that is 1,500, directly calculation provided. Then plant and building, that means plant is different asset, building is different asset, and two assets depreciated by 5%. So this adjustment is for these both items. And what is the question for you? Prepare profit and loss adjustment account, that is revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही दूसरा नाम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ध्यान से सुनना. नंबर 2, दूसरा सोल्यूशन हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, दैट इज यू विल राइट देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and balance sheet of the new firm. These are the 3 parts of the solution for 10 marks. Usually profit and loss adjustment account is for 2 marks, capital accounts might be 4 or 3 marks, and balance sheet is also for 4 marks. Like this distribution is made, and let's see the how to solve it. But before understand, we had learned how to make the journal entries in the previous lecture. So we will start with the journal entries firstly, then we will go for the ledger accounts which are asked here in the problem. So first adjustment, first journal entry is usually, I have told you have to make, is the first journal entry, that is the distribution of reserves and funds. Here the amount of reserve, general reserve, that is 30,000. So it should be distributed in a 3:2 ratio, which is given here. So divided by 5, so you will get 5 6 30,000, that is 6,000 per share. 6 3 18. सो फर्स्ट पार्टनर का जो जनरल रिजर्व है, जो हम फर्स्ट पार्टनर को देने वाले, वो कितना होगा, 18,000 होगा. सेकंड पार्टनर को, विराज को कितना जाएगा, 6 2 12,000, क्योंकि हमने इस 30,000 के 5 पार्ट्स किए. पर शेयर
of profit, general reserve is 6,000. 6 into 3, 18,000. 6 into 2, 12,000. General entry, you know it, you have studied it in the yesterday's lecture. Now see the next step. I have told you that after distribution of reserves, profit and loss account balance is here. No profit and loss account balance in the problem. Now here we have to go for the next adjustment, next entry. That entry is dependent on your first adjustment usually, that is how much capital brought by new partner. And who is the partner here? Hari. Third partner हमारा कौन है? Admitted partner, that is Hari. So we will pass this journal entry on 1st April 2019, that bank account debit. Why bank account? Because cash at bank is given there. If it is given only cash account, we will make the entry cash account debit 60,000 to Hari's capital account 60,000. But here bank cash at bank is given, so that we will make this entry. What is the narration for it? Being capital brought by new partner in cash. See next slide where you will get goodwill adjustments. As I told you, after distribution of reserves, funds, next is a capital brought by partner, and then whatever the goodwill adjustments are there, that we will make. Here in the problem, goodwill amount is given, not given. It is given that you have to calculate it. So we will see first calculation in the working note slide. See working note, first goodwill calculation. It is the first step, average profit. That average profit is equal to total profit minus losses divided by number of years. So 3 years profits were given 48,000, 81,000 and 73,500, and divided by 3, because 3 years profits are given. Total of these all 3 years profits is 2,02,500 divided by 3. You will get answer of average profit 67,500. Now how to next step, you know that goodwill is equal to average profit is multiplied by number of years purchase. Here number of purchase is not given, as I told you in the adjustment. Number of years purchase, this thing is missing here. So what you will do? You will multiply it by 1, because it is just the average of that profits. So 67,500 multiplied by 1, it is a 67,500. Now we will share this goodwill in the partners. So we can pass the entry in the journal entries, that how to share this goodwill in the sacrifice ratio. Sacrifice ratio यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपके एडजस्टमेंट में कोई ऐसा बताए कि न्यू रेशो ऑफ द partnership firm after the admission is something given 1:2:3, suppose like this. If the ratio is given, and then only you have to calculate the sacrifice ratio. If it is not given new ratio, then you will just assume that old ratio is only your sacrifice ratio. So we will distribute this goodwill in the old partners only, because we had learned in the yesterday's lecture, goodwill raised in the sacrifice ratio, distributed in the sacrifice ratio, and in old partners. So I have made 5 parts of it. Goodwill per share is 13,500. Vasu got the 13,500 multiplied by 3 shares. He will get 40,500 of the goodwill value. Next is a Viraj is equal to 13,500 multiplied by 2 is equal to 27,500. This was the calculation that I have made in the slide. So you will get now what is the entry you have to pass, that goodwill account debit 67,500, total value of the goodwill of the firm, then to Vasu's capital account 40,500 and to Viraj capital account 27,500. You know the narration, being goodwill raised and distributed among the old partners in the sacrifice ratio. Sacrifice ratio is equal to old ratio, that I have discussed just now. Next, fourth
entry is regarding to revaluation. As I told you, goodwill adjustment over, you will start with the revaluation of assets and liabilities. So we will observe what adjustments. In adjustments, first adjustment regarding to the capital, second adjustment regarding to the goodwill, and third adjustment is regarding to the RDD calculation. We will have a rough look at the adjustment, so we doesn't require to change the slide again and again. See, RDD provision is 1500. Okay, so RDD create किया है क्योंकि RDD in existence नहीं है 1500. So what is the journal entry for it? That revaluation account debit to RDD account 1500. Next is a closing stock. Closing stock मतलब ही आपका स्टॉक है 25,500 ओल्ड वैल्यूएशन था, न्यू वैल्यूएशन 22,500 है, मतलब वो वैल्यू डिक्रीज हुआ है. व्हेन एसेट गेट डिक्रीज, एसेट हैव टू बी गेट क्रेडिटेड. तो उसका एडजस्टमेंट आप स्टॉक को क्या दोगे, फिर क्रेडिट दोगे, और रिवैल्यूएशन को ऑटोमेटिकली आ जाएगा डेबिट. सो हाउ मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स 25,000 एंड 25,500 and 22,500, that is 3,000. So you will give the effect with 3,000 only. Then number 5 is regarding to the plant and building, depreciated by 5%. 90,000 पे आएगा 4,500 and 36,000 पे आएगा, it is 1,800. So like this, these adjustment have to be effected in the journal entries. तो क्या क्या एडजस्टमेंट से कैसे इफेक्ट दिए हमने, देखो जैसे मैंने बोला आरडीडी क्रिएट किया गया है, सो 1500 इज क्रेडिटेड टू आरडीडी अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट दे दिया है. एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो एसेट को क्रेडिट दे दो, ये हमने सीखा था. सो स्टॉक इज गेटिंग डिक्रीज बाय ₹3,000, 25,500 से 22,500 हो गया, मतलब उसका वैल्यूएशन 3,000 से कम हुआ है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट एंड नरेशन वुड बी बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट. what happen here, the value of plant is get depreciated, reduced, so that plant को जो ओरिजिनल बैलेंस है, एसेट को जो ओरिजिनल बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, वो कम करना है, डेप्रिसिएट करना है, मतलब प्लांट को क्या देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा. सो दैट आई हैव गिवन अ क्रेडिट टू प्लांट अकाउंट 4,500 बिकॉज एट 5% ऑन 90,000 इट इज दिस फिगर. देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. जैसे प्लांट का डेप्रिसिएशन हुआ है वैसे ही बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन होगा, सो दैट 1,800 credited to building account and debited to revaluation account. Let's see next what happened here, that is a loss debited to partners capital account. revaluation loss हुआ है यहाँ पे. अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू मेक दिस एडजस्टमेंट, हाउ टू फाइंड आउट दिस इंट्रीज, ये आप इजीली कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, सी दैट आप सारी एंट्रीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट के पोस्टिंग देख लो. रिवैल्यूएशन को यहाँ पे डेबिट मिला है 1,500, यहाँ पे डेबिट मिला है 3,000, दैट इज 4,500, देन अगेन 4,500, सो 9,000, एंड दिस 1,800 अगेन डेबिट मिला है, सो 10,800 इज द टोटल डेबिट फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, इजंट इट. सो यू कैन फाइंड इजीली. हमें ये बैलेंस करना है, रिवैल्यूएशन का 10,800 का टोटल क्या हुआ है, डेबिट मिला है, ये सारी 4 एंट्रीज मिला के. सो आपको अभी इस अकाउंट को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, इक्वल क्रेडिट देना पड़ेगा, तब जाके रिवैल्यूएशन क्लोज होगा. सो दैट आई हैव गिवन क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,800. सी दैट. ओके, नाउ ये जो 10,800 का क्रेडिट है, ये क्रेडिट मतलब लॉस है. एक्चुअली व्हेन डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को बार बार डेबिट है, मतलब ये डेबिट बैलेंस क्रिएट हुआ, क्रेडिट में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है. सो ऑटोमेटिकली you will find that revaluation account have debit balance, debit is more than credit. रिवैल्यूएशन को डेबिट बैलेंस है, मतलब रिवैल्यूएशन लॉस है. जब डेबिट बैलेंस, जैसे हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट बैलेंस इट इज अ ग्रॉस लॉस,
Profit and loss account debit balance, it is a net loss. Like same wise here also, revaluation account debit balance, it is a revaluation loss. So you have to give credit to revaluation account, and while writing narration you have to write there revaluation loss debited to partners capital account. तो किन पार्टनर के लिए ये लॉस ट्रांसफर करना है? तो जो ओल्ड पार्टनर है वही ये लॉस बियर करेंगे. न्यू पार्टनर का यहाँ पे कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि वॉट एवर द एसेट्स रीवैल्यूड दैट आर ऑफ ओनली that are owned by only the old partners before the admission of the partner, and that's why only the value of that revaluation loss would be debited to the old partners capital account. And that's the end of the journal entries. 8 entries were there, and you have to make as usual a total of journal entries, that is 1,79,100 that I have made here. See the next slide, we are going to start with the ledger accounts. लेजर अकाउंट के पार्ट पे मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि आपके प्रॉब्लम में क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनाओ. So here we are starting the first part of the solution, that is revaluation account. अभी ये प्रिपेयर करते वक्त मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपकी एसेट की वैल्यू जब जब कम होगी दैट इज डेबिटेड हियर इन द डेबिट, एंड इफ इट इज इंक्रीज देन यू हैव टू क्रिएट एसेट 3 हमें यहाँ पे मिली थी जो डिक्रीज हुई है. स्टॉक का वैल्यूएशन 25,500 से 22,500 हुआ, सो दैट 3,000 से स्टॉक का वैल्यूएशन कम हुआ है, मैंने डेबिट डाल दिया टू स्टॉक अकाउंट. ओके, देन प्लांट की वैल्यू भी 4,500 से डेप्रिसिएट हुआ है, सो दैट आई हैव रिटन हियर टू प्लांट अकाउंट 4,500. एंड नेक्स्ट बिल्डिंग ऑल्सो 5% 1,800 से डेप्रिसिएट हुआ है. 3 एसेट हमने यहाँ पे डेबिट डाल दी. व्हाट इज अबाउट आरडीडी? आरडीडी जब जब क्रिएट करते या फिर उसका वैल्यूएशन इंक्रीज होता है, आरडीडी प्रोविजन बढ़ जाता है, दैट टाइम यू हैव टू डेबिट इट. एंड द सेम फिगर आई हैव रिटन हियर 1,500 ऑफ आरडीडी क्रिएटेड एज पर द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, and nothing credit given to the revaluation account, so that we will just add up all these figures, we get total of 10,800, and we have to transfer this amount, balance this amount by partners capital account. That's why I have given credit to by partners capital account, so that when you will get the figure 10,800 at the credit side, here you can come to know that it is a revaluation loss because debit is more than credit. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब डेबिट बैलेंस है so it is a what loss. If credit is more than debit then it is a revaluation profit. यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है, so 10,800 we are suffering from the losses and that must be suffered by the old partners. So it is debited to old partners. See, मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया. ये जो 10,800 है that is distributed among the old partners Vasu and Viraj. So next part of solution we had started partners capital account. How to prepare it? See in the table particulars Vasu, Viraj and Hari. Yes, incoming partner का भी अभी यहाँ पे नाम ऐड हो जाएगा in the debit side, and in the credit side also 3 partners we can see here. And while writing this account you have to start with the credit. हाउ टू स्टार्ट विद द क्रेडिट? फर्स्ट पोस्टिंग आपका हमेशा आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये पार्टनर्स के ओल्ड बैलेंसेस है. तो प्रॉब्लम में हम जाएंगे. प्रॉब्लम में आपको दोनों के बैलेंसेस दिखाई देंगे ऑन द लायबिलिटी साइड, दैट इज 1,08,000 ऑफ वासु एंड 72,000 ऑफ विराज. ये बैलेंसेस पहले आप ब्रॉट डाउन करोगे टू द क्रेडिट साइड. Okay, so I have written that balance is 1,08,000 and 72,000 as per the adjustment. Then I have distributed second step by general reserve distribution of 30,000 in 18,000 and 12,000. Viraj is getting reserve
12,000 and Vasu is getting reserve of 18,000. Then Hari has brought, new partner has brought 60,000 at incoming partner have brought capital of rupees 60,000. So I have created here in the Hari's column 60,000. यहाँ पे दोनों में डैश दिया क्योंकि उसका ओरिजिनल बैलेंस अभी तक बिजनेस में नहीं था, जनरल रिजर्व में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सो दैट ही विल नॉट गेट शेयर इन द जनरल रिजर्व. नेक्स्ट गुडविल एडजस्टमेंट, जैसे हमने जर्नल एंट्रीज का किया था वैसे ये भी फॉलो करने वाले हैं. पहले रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वी विल गेट firstly these original figures in the liability side, that is whatever the balance of capital account, whatever the general reserve or profit and loss account balance. Then we will observe the adjustment में देखेंगे वहाँ पे आपको कैपिटल कितना लाया न्यू पार्टनर ने, इनकमिंग पार्टनर ने, वो दिया जाएगा. दैट वी विल बी राइटिंग हियर इन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये अकाउंट हमेशा हम लास्ट में लिखेंगे, इसका कॉलम हमेशा लास्ट में लिखेंगे. देन गुडविल एडजस्टमेंट में ये बताया था कि गुडविल रेज करो, तो गुडविल रेज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि गुडविल रेज हुआ तो क्रेडिट में करना है. दैट अमाउंट इज 67,500, सो आई हैव रिटन हियर 40,500 फॉर द वासु and 27,000 for Viraj. That calculation we have previously done. Now we will transfer the revaluation profit or loss. That here is a loss, so we have written it on the opposite side. Revaluation loss कहाँ पे लिखा था हमने, on the credit side, और ये अब ट्रांसफर होके ऑपोजिट साइड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में. क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, 6,480 and 4,320. So this was the last posting which from the your calculations, and then you will balance these all three partners capital accounts. तो पहले वासु का करेंगे, वासु की टोटल कर ली 1,66,500 minus 6,480, so you will get figure of 1,60,020. Viraj 1,11,000 minus 4,320, you will get balance of 1,06,680. हरी के कॉलम में बस क्रेडिट दिया है 60,000 का, डेबिट में कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, सो यू विल राइट हियर 60,000 एज अ बैलेंस. So two balance carried down. These are the new balances on the capital account of all partners. So you will be writing all these partners capital account balances in your new firm's balance sheet. That's why we had prepared this partners capital account to find out what, to find out the balances on the capital account of all partners, because previous balances are not in useful, because we are going to distribute, making the adjustments in their account, so there are changes. These changes only affected in capital account, that effects, after getting that effects, your what you found out, that is the new balances, and these balances you will be seeing in the balance sheet. तो हमारा ये तीसरा पार्ट स्टार्ट हुआ, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज यू नो इट इज अ स्टेटमेंट and it is showing you liabilities and assets. You have to make here inner and outer column किए मैंने, और यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है, ये अलग डेट दिखाई दे रहा है. आज क्या डेट दिखाई दे रहा है, as on 1st April 2019. Why? Because at the time of admission of partner you are making this balance sheet. सो आज हम 1st अप्रैल 2019 को अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा. सो ऑटोमेटिकली दीज ऑल फिगर्स, दीज ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यूज आर ऑन 1st April 2019. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन योर कैपिटल अकाउंट न्यू बैलेंसेस 1,60,020, then 1,06,680 of Viraj, and Hari's capital account balance 60,000. Total of all these partners capital balance is 3,26,700. Then these creditors, ये मैं कहाँ से रेफर कर रहा हूँ, ये आपके प्रॉब्लम से रेफर कर रहा हूँ. आपके प्रॉब्लम में ये ऑलरेडी दिया हुआ है. सी देयर क्रेडिटर्स को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, उसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है.
तो एज इट इज बैलेंस आएगा 45,000. बाकी भी देख लेते हैं. डेटर्स 66,750, कैश एट बैंक 750, स्टॉक 25,500, इन्वेस्टमेंट 36,000, प्लांट एंड बिल्डिंग. तो किस किस में चेंजेस है, किस में चेंजेस नहीं, वो पहले देख लेते हैं. कैश एट बैंक 750 है, पर ये देखो कि आपने 60,000 का कैपिटल, जो पार्टनर ने, हरी ने 60,000 का कैपिटल कैश में या फिर बैंक बैलेंस से लाया है. सो इट इज़ अ टोटल ऑफ 60,750. एंड देन डेटर्स 66,750, उस पर एडजस्टमेंट है आरडीडी का, दैट विल बी माइनस. देन स्टॉक, उस पर कुछ चेंजेस है, 22,500 अभी स्टॉक हुआ है तो -3,000 हम दिखाएंगे. इन्वेस्टमेंट अनटच्ड है, उसको कुछ भी किया नहीं है, एज इट इज़ विल राइट द 36,000 बैलेंस. एंड प्लांट एंड बिल्डिंग का हम डेप्रिसिएशन माइनस करने वाले. सो दैट वी विल सी इन द बैलेंस शीट. These all things you are known very well because you have prepared this balance sheet in the previous year also. जैसे मैंने बताया क्रिएटर का बैलेंस एज इट इज़ 45,000 यहाँ पे मैंने दिखाया है. देन कैश एट बैंक 60,750, ये कैसे हुआ, 750 ऑलरेडी बैलेंस था बैंक अकाउंट में, प्लस 60,000 का कैपिटल न्यू पार्टनर ने, हरी ने लाया है. Then debtors have original balance 66,750 as per old balance sheet. नए बैलेंस शीट में आरडीडी जो क्रिएट किया है हमने वो माइनस करने वाले. सो विल गेट फिगर ऑफ दिस 65,250. देन स्टॉक वैल्यूएशन इज 25,500. द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक इज डिक्रीज टू 22,500, so that we will deduct the value of 3,000 by subtracting, by showing less decrease 3,000. Then investment, as it is, will write the 36,000 amount because there is no adjustment regarding to the 36,000, no increase or decrease in investment. प्लांट में आपको दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन 4,500 का, दैट वी हैव डिडक्टेड. बिल्डिंग 1,800, दैट वी हैव डिडक्टेड. सो न्यू फिगर्स ऑफ प्लांट इज 85,500, बिल्डिंग वैल्यू 34,200. And lastly, last thing which is very important for you people, that goodwill is raised in the books of the firm, it is not written off. As per the last lecture, we had seen four situation of goodwill, four adjustment, four types of goodwill adjustment. In one type, that it is goodwill only raised. Under that I have given a note that goodwill, if only goodwill raised, that time you have to just show it in the balance sheet. अगर goodwill रेज किया है और राइट अप किया है तो आपको गुडविल दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस रेज किया है. एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू शो दिस गुडविल अमाउंट इन द एसेट कॉलम, दैट इज 67,500. एंड फाइनली इफ यू विल मेक द टोटल ऑफ ऑल दीज items on the liability side and asset side, you will find the total 3,71,700. Same figures, it is tallied figure, and all adjustments are correct. Like that only you have to solve the problem. And what are the point to remember while solving these problems that I have given in the next slide? See that point to remember. Prepare a journal entries in the following sequence. आपको जब जर्नल एंट्रीज करनी है पास, तो आपको ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी. पहली स्टेप क्या है, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, फंड्स, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट बैलेंसेस. जो रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Second entry, second thing you will write there in your journal entries, that is capital brought by new partner. So whatever the amount of capital brought by new partner, that is the second sequence for passing journal entry. Then there is a goodwill adjustment you will find in the adjustment. It might be second adjustment or third adjustment. You will make that all entries in your journal entry columns. Then revaluation of assets and liabilities, this comes in the fourth sequence, fourth rank. So you will make the revaluation of assets and liabilities entries, and finally you will find out the revaluation profit or loss. That journal entry will be passed at the end.
सो दिस आर द सीक्वेंसेस यू मस्ट रिमेंबर. ये सारे सीक्वेंसेस आपको ध्यान में रखने हैं. ध्यान में रख के आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. सेम थीम यू हैव टू यूज वाइल प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट्स ऑल्सो. बस आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए अलग अकाउंट ओपन करना है. तो आप ये कर सकते हो साइड बाय साइड. यू विल प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट देन लीव 5 to 6 lines and write partners capital account. Leave that page, come on the next page, write their balance sheet. So automatically you will start with the same thing. Balances you will brought down in partners capital account, then you will write reserves there, and then you will write capital brought by partner, then you will write goodwill adjustment. फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में आके वहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वहाँ पे जाके आप सारे प्रॉफिट और लॉसेस फाइंड आउट करो. ट्रांसफर इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंसिंग इट, एंड अल्टीमेटली यू विल प्रिपेयर फॉर द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ओल्ड बैलेंस शीट को रेफर करके. सो दीज आर द थिंग्स विच आर नीडेड टू बी अंडरस्टूड. And this is the end of the third session. Moreover, we will practice offline. I will provide you a PDF and more important problems and solutions. And very important that if you have the difficulties, please ask me that I will try to solve. And this was the end of the session. Thank you for watching this video.